हेलो। आज मैं कैनवस शीट यूज़ करने जा रही हूँ जो मैंने कैंसन की ली है, जो 300 GSM पेपर है। मैंने इसे 50 रुपीज़ में लिया है। इसमें 5 पेपर्स हैं। सो देखते हैं कैसी पेंटिंग होती है इस पेपर पर। Here my outlines are ready. Today I am going to make a sunset scene with train. So let's get started. Here I am going to use purple, red, yellow and orange and also white color. On the above I am going to use the purple color for the darker shade, and in the middle I am going to use the red and the shade of yellow and giving the shade of orange color. Sorry for the blurred video. Here I am going with red and white, which makes a pink shade. And at last I am going to use yellow and orange color and keeping it mixing so we can get a beautiful background like the evening. I am painting for the first time on this sheet. I think that I use a lot of water on the pink shade, so my colors are going to transparent with this sheet. Don't use lots of water as I do. I think I should wait the color go dry. Let's see how it's done. अभी तक तो उसको देख के अच्छी फीलिंग आ नहीं रही है, बढ़िया दिख नहीं रहा है. Here I am going to make a layer of orange color and mix it with the pink and purple, and a little bit of yellow I am going to do on it. I take the little bit of your red color and mix it with orange so that it would not be look different. Merge the colors. Here my purple color is gone dried, so I use purple on the sheet and merge it with the red. And now it's time to paint the train. I am using here the black color for the bridge. Here I am doing the lighter shade of black color. When it gets dry, then I apply the second layer, and on the train first to do a lighter shade of black, and it's time to highlight the train.
अब ब्रिज पे दूसरी लेयर करेंगे। पहले हम इसे आउटलाइन कर लेंगे और लाइटर टू डार्कर जाएंगे। यहाँ ब्रिज पर हाइलाइट्स दिखाने के लिए मैं वाइट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे फ्यूम बनाने के लिए या फिर स्मोक भी बोल सकते हैं, उसको बनाने के लिए मैं पहले फर्स्ट लेयर वाइट से करूँगी। फिर उसके बाद इसमें हाइलाइट्स दिखाने के लिए ब्राउन कलर, ब्लैक कलर और वाइट का यूज़ करूँगी। यहाँ मैं डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो का यूज़ कर रही हूँ ग्रासेस दिखाने के लिए। It's easy to blend the colors on this sheet, and this canvas sheet is
awesome. And finally my painting is done. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.